Ladies and gentlemen, please settle down. We're just about to start. All of you, please take your seats. We're just about to begin. All of you, please settle down. We are just about to begin. We're starting the celebrations for this special evening. All of you, please take your seats. We're about to begin. A very good evening to each and every one of you. I'm Hem Kaur Saroya, your host for this event. It's an honor to be able to host each and every one of you here and take you through this esteemed awards ceremony. Distinguished guests, esteemed attendees, a very warm welcome to Season 2 of the Z National Achievers Awards 2023, made possible with the support of our special partners, Kalyan Jewellers and Nippon India's founding mutual and real estate developers. Now we're gathered here tonight in celebration of excellence and inspiration as we pay tribute to the finest Indian entrepreneurs and outstanding individuals. This exclusive platform, it's been carefully, meticulously curated by Z Media to honor those extraordinary achievers who've left an indelible mark in their respective fields. Through the years, these remarkable individuals, they've not only displayed outstanding grit and performance, but they've also showcased their prowess as innovators and thought leaders. Their unwavering and meaningful contributions have had a significant impact on their respective industries, serving as a guiding light to others in pursuit of greatness. Tonight, we recognize these visionaries, these trailblazers who fearlessly embrace challenges, turning them into opportunities. I would once again like to extend our deepest gratitude to our special partners, Kalyan Jewellers and Nippon India's leading mutual and real estate developers. Now, as I mentioned, this event, it celebrates excellence, resilience, the spirit of achievement. It's an honor to be in the presence of such extraordinary individuals. We look forward to an unforgettable evening filled with heartwarming stories, well-deserved accolades, and it's my pleasure to introduce a representative from our Z family, Mr. Sridhar Mishra, Chief Revenue Officer of Z Digital and Publishing, to extend a very warm welcome to all of you. Please put your hands together as we invite Mr. Sridhar Mishra, Chief Revenue Officer, to come forward and address the audience. Thank you, ma'am.
Excuse me, can I get the prompter? A very good evening to all of you. I do understand that coming over on a Friday weekend is not easy, but trust me, it would be an evening to remember. This star-studded evening would be nothing but mesmerizing and exciting. I would want to extend my heartfelt gratitude to all of you for your gracious presence, for making this event such a great success. I will take this opportunity to welcome our distinguished guest tonight. A very special thanks to our chief guest, the eminent young leader who has changed the face of Indian politics with his inspirational and innovative ideas. His only objective to uplift the lifestyle of our fellow Indians, our very own Mr. Arvind Kejriwal, sir. Thank you so much for gracing this event with your presence. This evening will witness the melody king, the phenomenal singer who has enriched the world of cinema with his mesmerizing music over the years. The Padma Shri awardee, our very loving, cherished Kumar Sanu. Sir, thank you so much for making this event so very glittery with your presence. This is not all. Hold your breath. We have Nusrat Bharucha, the very versatile and glamorous actress who has made a solid mark in the silver screen with her fabulous acting. Ma'am, thank you so much for attending this event. Before I take you through the journey of why these awards were created from the House of Z, I would like to congratulate all the winners who are nothing less than shooting stars. They are known for their fabulous contribution, which has not only elevated their own lives, but also the people associated to them. May I call for a loud round of applause for the winners tonight. There is a special mention and a special thanks to Dr. Idris Loya, who is the Chief Technology Officer of Z Group, and Mr. Abhay Ojha, who is the CEO of Z Media Corporation Limited. Thank you very much, sir. Talking about Z Digital, so Z has over 350 million users. We are present in 101 countries. We are serving content in almost 13 languages. We are serving to almost 19 content genres. Apart from 350 million users that we are getting on our platform, there is a significant presence that we have on our social media platforms, and we have in excess of 165 million users who are consuming our content on social media handles. So Z, in a sense, we can say that every third user in the Indian digital landscape somewhere is consuming Z's content. Z National Achiever Awards was convinced last year with a purpose, an organization or an individual who overcomes many obstacles to achieve set aspirations and desires. The force to accomplish and accent the challenges should be fierce and strong, with a drive beyond traditional standards. Z treasures and invigorates such organization individuals, the game changers of tomorrow. The Z National Achiever Awards is a platform that celebrates these game changers, a platform that marks the organizational individuals' sheer diligence, intelligence, and path-breaking performance. Z Media Corporation Limited believes the greatness of nation is built on the greatness of the people and their determination to bring changes. We believe these visionary organizations, individuals who work tirelessly to bring change, are setting extraordinary example of selfless service, striving for goals despite the odds and making India proud through their personal efforts. The National Achiever Awards welcome organization individuals from varied industry sectors under one roof and have their presence to light up
the gala. The visionary leaders and hardworking teams are being recited for their consistency, which makes the utmost efforts and dedication. Without taking much of your time, I would like one more time to thank our esteemed guests who have graced this occasion with their presence and agreed to give out the prizes to the most worthy shining stars of the evening. Thank you very much. Well, thank you so much, sir, for sharing your kind words. Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, as we commence this special event, the Z National Achievers Award, I request our esteemed guests to kindly join us on stage for the lamp lighting ceremony. I would like to call upon the stage Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal. Sir, please. A big round of applause, everyone. Moving on, we also have with us Mr. Abhay Ahuja. Thank you so much. Please join us on stage, sir. And then we have with us the lovely Miss Nusrat Bharucha. If you could please join us on the stage. We then have with us Mr. Idris Loya, Chief Tech and Innovation Officer, SL Group. Sir, please. And of course, Mr. Sridhar Mishra, Chief Revenue Officer, Z Digital Publishing. And our guest of honor, Ms. Nusrat Bharucha, as I mentioned earlier. Thank you all for joining us on the stage here. Thank you so much, everyone. That is Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal. Abhay Ahuja, CEO, Z Media, Ms. Nusrat Bharucha. We have with us Dr. Loya, Chief Tech Officer of SL Group and Chief Revenue Officer of Z Digital and Publishing, Mr. Sridhar Mishra. Thank you so much. Mr. Kejriwal, if you could please just stay on with us for a little while longer. I'm going to have to request you to stay with us. Our chief guest, of course, needs no introduction, but since it's not every day that you get such an opportunity, I'd be remiss if I didn't grab it. Of course, we have with us Mr. Kejriwal, Chief Minister of Delhi, a man of the people. Delhi Chief Minister, Mr. Kejriwal, has been a source of inspiration for millions and has led various movements that have brought about exemplary social change and awareness. Sir, thank you so much for joining us tonight. I would request you to please address our audience and share a few words with us. जी ग्रुप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं जी मैनेजमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज इतने खूबसूरत कार्यक्रम में और इतने अच्छे अच्छे लोगों के बीच में मुझे इनवाइट किया। मुझे कहा गया है कि मुझे कुछ लोगों को अवार्ड्स देने हैं। मैं उनके बायोडाटा और उनके अचीवमेंट्स पढ़ रहा था और मुझे लगता है कि मैं उन्हें क्या सम्मानित करूंगा, शायद अवार्ड देके मैं आज सम्मानित होऊंगा उस किस्म की शख्सियतों से।
हम लोग देखते हैं कि आप अगर 24 घंटे किसी भी दिन उठा के टीवी चैनल देख लीजिए, कोई भी, और इसमें मैं किसी पर्टिकुलर टीवी चैनल की बात नहीं करना चाहता, सो शायद उस 24 घंटे में आपको 5 मिनट 10 मिनट भी आपको पॉजिटिव खबर देखने को नहीं मिलती। उसमें इतनी नेगेटिविटी ऐसे माहौल के अंदर आज जब हम अचीवर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश में 140 करोड़ लोगों के देश में लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में ढेरों लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनका रेगुलर काम नहीं है, फिर उससे भी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर खूब अचीव किया है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र से अलग होकर समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पूरा दिन नौकरी करते हैं, शाम को टाइम मिलता है, कुछ बच्चों को जाके पढ़ा देते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, फ्री में कितनी सेवा करते हैं समाज की। बहुत सारे आज ऐसे लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर, मैं देख रहा था, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, एक्टर्स हैं, गायक हैं, अपने अपने क्षेत्र के अंदर नाम रोशन किया है। आज उन सारे अचीवर्स को उनमें से चुन के, और मैं अभी ओझा साहब से डिस्कस कर रहा था, इन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से बहुत मुश्किल प्रोसेस से चुन के आज एक व्यक्ति को अवार्ड दिया जा रहा है। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में फले फूले खूब आगे बढ़ें। दूसरा, पिछले कुछ समय में पूरे देश भर में मैं घूमा, अभी इन दिनों में अलग अलग राज्यों में गया। मैंने ये देखा, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, सबने अपने अपने राज्य में कुछ ना कुछ तो अच्छा काम किया है। हम चाहे किसी को कोई जो मर्जी, राजनीति में हम एक दूसरे को गालियां देते हैं, ये पार्टी वाला ऐसा, ये नेता ऐसा, जो मर्जी, लेकिन सब लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। हम एक दूसरे से सीख क्यों नहीं सकते? Why are we working in silos? Why are we reinventing the wheel? दिल्ली में हमने शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। हमने सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। 75 साल के अंदर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल हो गया था देश भर में। हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। मैंने कई बार बोला है कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। कोई भी दूसरी पार्टी की सरकार अगर मुझे बुला के कहे कि अरविंद जी आपने क्या किया, आपने कैसे किया, आप हमें सिखाइए, हम फ्री में सिखाने को तैयार हैं। हम अपना शिक्षा मंत्री थोड़े दिन के लिए लोन पे दे देंगे उनको, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ही तो देश है। राजस्थान भी अपना ही है, छत्तीसगढ़ भी अपना ही है, वेस्ट बंगाल भी अपना ही है, असम भी अपना ही है, केरला भी अपना ही है, तमिलनाडु भी अपना ही है। अपने को क्यों दिक्कत है? मैं अभी थोड़े दिन पहले तेलंगाना गया था। तेलंगाना में केसीआर साहब ने इरिगेशन के क्षेत्र में इतना शानदार काम किया है। खेत खेत के अंदर उन्होंने पानी पहुंचा दिया, ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने अभी मेरे को जब बुलाया था, उन्होंने एक कार्यक्रम को इनॉग्रेट करने के लिए बुलाया था जिसमें 4 करोड़ जनसंख्या है उनकी। हर व्यक्ति का आंख की जांच कराई उन्होंने, हर व्यक्ति की, 4 करोड़ लोगों की आंखों की जांच कराई। जिसको चश्मा चाहिए था उसको फ्री में चश्मा दिया, जिसको ऑपरेशन कराना था उसका फ्री में ऑपरेशन किया, जिसको दवाई चाहिए थी उसकी फ्री में दवाई की। इतना शानदार प्रोग्राम एंड इन अ वेरी स्मॉल कॉस्ट, बहुत कम पैसे में। तो मैं उस दिन यही सोच रहा था, यार हम एक दूसरे से सीख क्यों नहीं सकते? सारे लोग, इतने सारे लोग इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे से सीख क्यों नहीं सकते? पता नहीं क्यों हम सारे एक दूसरे की टांग खींचने में, लड़ने झगड़ने में, नेगेटिविटी में पड़े रहते हैं। और ये तो सरकारें हैं, लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सरकारें, जितनी सरकारें हैं वो अच्छा काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने की बजाय उनके सरकारें भी उनका काम रोकने की कोशिश कर। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अच्छे काम को प्रेरित करने की बजाय अच्छे काम को रोकने की कोशिश करता है।
चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, कोई अच्छा बिजनेसमैन, कोई अच्छा स्टार्टअप बेचारा बच्चा कॉलेज से निकलने के बाद कोशिश करने की कोशिश करे, पूरा सिस्टम उसे रोकने की कोशिश करता है। इसे बंद करना है, अपने को पूरे सिस्टम के अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म करना है और एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना है। नहीं तो अपने देश के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, लोग बहुत इंटेलिजेंट है अपने देश के अंदर। अगर ये नेगेटिविटी, सिस्टम की नेगेटिविटी हम ठीक कर दें तो हम दुनिया का नंबर 1 देश बन सकते हैं। मैं फिर से एक बार जी ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस शानदार कार्यक्रम को करने के लिए और आज मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much for your inspiring words, sir. I would ask you to please, I'm so sorry for this, but please come back on stage because we would really like you to bestow these prestigious awards on these people who have joined us here today, who've done some exemplary work in their fields. We have with us literary entrepreneurship, Aditi Maheshwari. Sir, please come on stage, Miss Aditi Maheshwari. Miss Aditi Maheshwari and her Vani publication have a legacy of over 6 decades where they've been championing various social causes through books. A terrific change agent, she's been at the helm of radical changes that define the true spirit of a democratic society. So thank you so much. And also I would now like to call on stage Mr. Abhay Oja, please, to express and to give our token of appreciation to Mr. Arvind Kejriwal, sir, please. Thank you so much for joining on the stage, sir. Thank you so much, Mr. Abhay Oja, and thank you so much, Mr. Kejriwal, for joining us tonight. Well, moving on now, I would now like to take the time to extend our heartfelt gratitude to our special guest, taking out the time to join us, as I mentioned, in celebration of excellence. It is our honor to welcome Ms. Nusrat Bharucha, a versatile actor who's graced the silver screen with her charm and charisma. Please give a round of applause for the wonderful Nusrat Bharucha. And I would also like to call on stage Ms. Vinita Kumar, Entertainment and Lifestyle Editor, India.com, to please welcome our special guest, Ms. Bharucha. Hello. I hope you're all settled now. Vinita, over to you now. Take it away. Am I audible? Yes, you are. So, ladies and gentlemen, Nusrat Bharucha here. I'm sure दिल चोरी साडा हो गया नुसरत. यहाँ पर सब अपने mind और heart में यही play कर रहे हैं. So, welcome. Thank you for having me. Tell me this, national achiever. I'm sure आपने बहुत trophies already जीती हैं नुसरत. बहुत awards आपके घर में होंगे. National achiever platform पर. What is the mood like? Very honored, very prestigious. जब मुझे पता चला that this is what I've been called for and this is what I've been honored with, it took me a while because बहुत लोगों को बहुत साल लग जाते हैं to give back to an industry or to a society that actually make them what they are. And somebody asked me this question, why have I changed my film choices and why have I started doing different things? And I think while giving them an answer is when I realized this. It's the day when I question myself that मैं क्या कर रही हूँ? What am I giving back? This industry gave me a position, gave me a bread and butter, made me a household name. But what have I given back to them? I think my thought process changed, my film story selections changed.
And suddenly I had films like Chori, Janhit Mein Jari, Chori 2. I'm doing another very important film that's releasing on the 18th of August, which is right around Independence Day. And that's again a story of a very strong girl who's making her way back to India. So I don't know, I think these stories found me when I changed my thought process and I started making those slightly more conservative, slightly more thought of, slightly more conscious choices. Real also. Yeah. So Nusrat, you know, achievement का बात हो रहा है, inspiration का बात हो रहा है. I'm sure you know a lot of people here would want to know that एक ना एक ऐसा moment आता है. Also it's very relatable to ask. जहाँ पे ना आपको personally लगता है that you know this is my achievement. You know, सब awards वहाँ रखे रह जाते हैं, सब रखा रह जाता है. But आपको लगता है this is my achievement, real achievement. What was that moment? I'll tell you honestly, it's not when your film becomes a hit. It's not when your songs get, I don't know how many million views. It doesn't happen then. I think it happens when you're sitting and having dinner with your family who you've grown up with over the years and who've always looked upon at you and said, engineer, doctor, lawyer, kya banegi? Yeah. Because my family is full of really overachievers. And I didn't even do a master's. I only did my BMM, and I never knew at that dinner table in my family who I would eventually be. But when you sit across them, when I sit across them now, they look at me with no question as to why not a doctor, why not an engineer. When I sit amongst them now, I can see it in their eyes that for them, I've achieved something. For them, I've made my name in a field which they never expected me to be in, firstly, or to achieve anything in. Just that kind of makes me feel that, you know, I'm good, I'm great. Hit can it, go anywhere guys. from here. Hit it. Yeah. Great, Nusrat, and fantastic to hear that. Tell me this. बहुत लोग ने वैसे मुझे पूछा आपको पूछने के लिए कि अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं शायद एक प्रोड्यूसर होती, फिल्म इंडस्ट्री को और उनके साथ कुछ आगे कुछ काम कर रही होती, बढ़ रही होती. I think very early on in college, I knew I wanted to be part of making things happen. Whether it was stories, whether it was plays, whether it was musicals, whatever it was. मैं college से backstage कर रही हूँ काम. बहुत बाद में मैं front stage आ गई थी. But I think I would support the industry and I would be part of it, if not an actress. Yeah. Right. Nusrat, you know, यहाँ पर बहुत लोग ना fighters हैं, you know, बहुत लोग यहाँ पे achievers हैं, because you know the kind of journey that they have had is fantastic and unprecedented. नुसरत की लाइफ में ना जब ऐसा कोई मोमेंट आता है जहाँ पर you know she probably hits the rock bottom, you know, वहाँ से उठ के वापस खड़े होने के लिए नुसरत क्या करती है? मैं एक चीज़ याद रखती हूँ कि मैं यहाँ एक ही रीज़न से आई हूँ, is my absolute love for it and my passion for it, and nobody around me, कोई भी दुनिया में वो मुझसे नहीं छीन सकता. बाकी कितना भी मुझे हरा दे, कितना भी मुझे गिरा दे, and है we are in a society where, like Mr. Arvind Kejriwal was saying, that हम क्यों एक दूसरे को नीचे खींचते हैं? Why are we in a system where first only we try and stop people from progressing instead of actually giving them a nice environment to flourish in? तो वो होता है. But I think I remember specifically that I am here only for this. This you cannot take away from me. Yeah. So I live to fight another day. 70 मिनट है मेरे. Yeah. नुसरत, you know, एक छोटा सा skit था मेरे पास. I thought I'll just ask you. आपने बहुत act किया है, you know, fantastic characters किए हैं. Honestly, personally telling you, Chori has been my favorite. Thank you so much. And I'm so glad you're doing Chori 2 as well. पहले ही promote कर दे रहे हैं. तो you know, we have with us our group CTO, Mr. Idris Loya. So I would like to call him on stage, please, sir. And you know, एक बात ये है कि actually he's my boss's boss's boss. So, so you know, it's just fantastic to see कि अभी हमारे पास ना appraisal time गया. और क्या हुआ ना कि हाइक मिलता है नहीं मिलता है वो तो सब चार्टर रहता है, कोई खुश तो होता नहीं है ऑनेस्टली. या सो आई जस्ट वांट यू टू प्ले मी फॉर अ मिनट, आस्क हिम फॉर द हाइक दैट यू डिजर्व. राइट सर, आप नुसरत के साथ डील कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं. ओके, ओवर टू यू.
because you do this every day. I don't. Thank you. Sir, I've been under you for many years now. It's been 15 years? 10 years? Oh, I was right. It's 11. It's been 11, 12 years. And I've not asked for a hike yet. I have not asked for a hike yet. Correct. Because all these years, मुझे लगा आप खुद ही दे दोगे क्योंकि मैं deserving हूँ. तो इस बार मुझे लगा क्योंकि 11 साल से आपको बिल्कुल ही नहीं चमका कि मैं आज कैपिटल लेटर्स में आपके सामने एक माइक पे लाउड स्पीकर्स पे ये कह दूं कि इट्स आइदर नाउ और आई एम वॉकिंग आउट. I need that hike. I don't deserve it. I need it. I demand it. जरूर मैम, क्यों नहीं. Yes. कितना. सर वो क्वांटिफाई में नहीं कर सकते कितना चाहिए भाई. कितना. Mail, email. He will write it on email. It's better to have it on proof, right? On record. So मैं mail कर दूंगी एक figure. अभी बता दीजिए. नहीं. That is a trick question. You should never ask the other person. You should just tell them what you. You should never ask the other person. He will never give it to you. Okay, so how about whatever, 100%? Okay, unreal, babe. You got to achieve something that is realistic. 30%? Yeah, we are in 23. 3 is a round number. 30%, so that's not. Listen, she was asking for 200. I have brought her down. I have done a good bargaining for your side. I'm actually on your side. You know, Thank you. To be fair. Thank you. I think 40%. 30 डन करते हैं सर वरना ये जाएगी नहीं. Done. Done. 30%. You will be able to contribute 30% more. अच्छा, okay, done. 30%. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, but I'm going to remember that hike wala baat, sir. Yeah. So yeah, I'm going to ask you to please stay on with us because I would like to call you on stage so that we can bestow on Ms. Bharucha the award for exemplary performer in Bollywood. And there you have it, ladies and gentlemen, the award for exemplary performance in Bollywood to Ms. Nusrat Bharucha. Sir, please stay with us a little while longer. I'm so sorry I keep asking you to stay with us. Please do stay with us. Now, there are many other exemplary individuals who have joined us here tonight. Now, I would like Mr. Dr. Idris Loya to just hand over these awards to these exemplary individuals for the award in influencing voice of social change. That goes to Ms. Lakshmi Agarwal. I would request her to please come on stage, Ms. Lakshmi Agarwal. It's an honor to introduce a remarkable individual whose resilience and courage have inspired countless lives. Please join me in welcoming Ms. Lakshmi Agarwal, an acid attack survivor and a passionate activist. Ms. Lakshmi Agarwal, I would just like to have you just say a few words, please. There you go, ma'am. How are you feeling tonight? Good. Thank you so much. Good morning, everyone. मैं जहाँ पे भी जाती हूँ सबको गुड मॉर्निंग करती हूँ, चाहे वो कोई भी टाइम हो, क्योंकि जब जागो तो जब भी इंसान जागता है तभी सवेरा होता है. जब मैं उठी थी तब मैंने देखी बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में चल रही है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए आज आप लोगों के सामने हूँ. आपको अवार्ड इसलिए मिलता है घर में सजाने के लिए नहीं, आपको अवार्ड इसलिए मिलता है कि आप उसे लेके आपको और बढ़ावा मिलता है कि उस अवार्ड को लेके आप आगे और हिम्मत से और अच्छे से काम कर सकें. थैंक यू सो मच.
Thank you so much. Sir, you are not going anywhere. You're going to have to stay on with us. The next award for medical philanthropy, that goes to Dr. Keshav Nethani. Sir, please join us on stage. It's my absolute honor to introduce an exceptional individual who's not only excelled in the field of dentistry, but has also touched numerous lives through his philanthropic endeavors. Please join us, sir. Please join me in welcoming everyone, Dr. Keshav Nethani, the head of Max Super Specialty Dentistry. With a wealth of knowledge and expertise in the field of dentistry, Dr. Keshav Nethani has been at the forefront of providing exceptional services to his patients. And tonight we honor Dr. Keshav Nethani. Next up, the award for visionary leadership in education, it goes to Professor Najma Akhtar. Ma'am, please join us on stage. A big round of applause, everyone. It's an honor to introduce a distinguished academician and visionary leader who's made an indelible impact on the field of education. Professor Najma Akhtar, the Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia, with a wealth of knowledge and expertise, Professor Najma Akhtar has dedicated her life to shaping the minds of the future generation. Her relentless pursuit of excellence in education, it's earned her the widespread respect and admiration that, of course, as Vice Chancellor of Jamia Millia, Professor Najma Akhtar, please everyone, a big round of applause. Ma'am, I would request you to please share a few words with us. Thank you, Z Media, for giving me this this opportunity to address this group and to receive the much coveted award. We all do our work because we are paid for it, we are appointed there, but if it is recognized and if it recognized and reaches the heart of others and those who notice us, then we are really obliged and we are really happy that at least what we have done has been recognized. Working for a university is such a pleasure because what you do is to reach out to the world of youth, and that's very important for us because they are the ones who are going to take the nation ahead, and therefore they have to have the best of the education and the best of the skills which are the need of the country. Thank you very much. Thank you so much for inspiring words. And up next, we have the award for Most Trusted Real Estate Developer of South India. And the award goes to G Square Realtors Private Limited. G Square, South India's #1 real estate developer and Tamil Nadu's largest real estate developer, also widely credited in the real estate industry. We have with us to receive this award Mr. Junaid Babu, COO of G Square Realtors Private Limited. Thank you so much for joining us, everyone. A big round of applause. Come on. And now, Outstanding Digital Campaign Launch. Rupa Macroman, please join us on stage for the award for Outstanding Digital Campaign Launch. We would like to call on stage the representatives. Rupa Macroman, thank you so much for joining us tonight. And now, the award for Charismatic Personality in Sports. The award goes to Mr. Sandesh Jingan, who was not able to join us in person today. So we have an AV for him.
The AV, please. Namaste and good evening. I hope you all are having a lovely evening and your families and everyone are safe and healthy. Unfortunately today I couldn't come for the award because I got training in the morning and I couldn't get a day off. So I hope you understand. And but from the bottom of my heart, I really want to thank Z Media for the Charismatic Personality of the Year award in sports category. So thank you so much. I feel really humble. I feel really thankful. So again, thank you so much and God bless you all. Jai Hind. And up next, we have the award for exceptional contribution in pharmacy that goes to Dr. Ashutosh Parekh. The award for exceptional contribution in pharmacy goes to Dr. Ashutosh Parekh. Thank you so much for joining us. A big round of applause, everyone. Let's be generous in our praise of these exemplary individuals who've joined us here tonight. And up next, we have impactful voice in contemporary music that goes to Miss Rashmeet Kaur. Of course, she needs no introduction, but like I said, it's not every day that you get an opportunity like this. Miss Rashmeet Kaur, please, joining us on the stage. Everyone, please, a big round of applause. Thank you so much for joining us, ma'am. It's with great delight that I introduce to you a melodious voice that's left an indelible mark. Ma'am, I'm going to have to request you to please sing a little something for us. Oh, wow. It's your voice that is touched live, so of course we can't let you go. Hi everyone, good evening. Thank you so much. I'm very, very, very grateful and I feel blessed to receive this beautiful award. Thank you so much Z Media. And जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए मैं 2 लाइन तो गा ही सकती हूँ. आपने मेरे गाने सुने होंगे, but live गाना and live experience करना is, you know, it's completely different. So this is a latest song that I performed in Coke Studio and I would like to sing a few lines for you all. हो उस दे नाल यारी कदी ना रखियो जिसनू अपने ते गुरूर होवे राह चलदे नु दिल ना कदी भी दइयो चाहे लख चेहरे ते नूर होवे हाँ जी हाँ नूर होवे तकदीर बनायो फकीर हाँ मोके तख्त चढ़ायो हीर तकदीर बनायो फकीर हाँ मोके तख्त चढ़ायो हीर हाँ हो Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Dr. Loya, you've been very patient. Thank you so much for staying with us. Ladies and gentlemen, I don't need to remind you, a big round of applause for Dr. Loya, who's been waiting with us for so patiently, Chief Technology and Innovation Officer, SL Group. Thank you so much, sir. And I'm sure we're all eagerly waiting to hear the rest of the announcement of the big winners for the night. And I assure you there's lots lined up on that front for you. But before we proceed on that front, we have a very insightful panel discussion lined up for all of you. Now, in the fast-paced and ever-changing digital landscape, the way businesses and brands connect with their audiences, that has undergone a remarkable transformation. Over the past decade, digital marketing that has evolved into a powerful and indispensable tool, revolutionizing the way we engage, interact, and consume information. Tonight, we gather to explore the fascinating journey of digital marketing and its profound influence on media planning strategies,
we'll be joined by an elite panel of guests to share their views on the evolution of digital marketing over the past decade and its impact on media planning. Today, we have the privilege of having some of the brightest minds in the digital marketing industry gathered here to share their insights and experiences. Our esteemed moderator for this discussion is none other than Mr. Amit Duggal, founder of Monkey Minds, online marketing and creative specialist. Please join us on stage. And joining him on this insightful journey is a very esteemed panel of guests. Thank you so much, Mr. Amit Duggal. Thank you so much for joining us. As I mentioned, joining him on this insightful journey are our esteemed guests, each an accomplished expert in their respective domains. We have with us Ms. Shweta Singh, a distinguished Chief Digital Officer and Managing Partner at Motivator Group M, with over 20 years of experience in driving brand goals through digital marketing. Shweta brings a holistic understanding of the digital spectrum, encompassing media strategy. We then have with us Ms. Rashmi Sehgal, the Digital Transformation Lead at Zenith, who has been instrumental in helping brands accelerate their digital journey. Ms. Rashmi's efforts have even earned her the prestigious Women Disruptors Award in Media, a testament to her exemplary work in the field. Next up, we have with us Mr. Abhimanyu Vyas, a seasoned business head and director at Pivot Consult, whose expertise lie in building vertical-specific ML-based MarTech solutions with a remarkable 9-year track record in digital marketing. Abhimanyu Vyas has worked with prominent clients in this space as well. And finally, we have with us Jasya Fazli, Senior Director, Content and Innovation, Essence Media, a new media professional with a diverse background in publishing, brand communication, broadcast media, and brand content strategy. As you can see, it's a star-studded panel with the best from the industry. So let's buckle up for an enriching conversation. Without any further ado, I invite our moderator, Mr. Amit Duggal, to lead this engaging discussion. Thank you. Is it working? Hello, can you hear me? Thank you. Okay, before I start, I just want to check whether to set up some context for today's evening. You know, the topic is around digital marketing, how it has evolved and how it is creating ripples in terms of media planning and everything. So let me just step back and take a moment on, you know, talk about that how the superstars were created earlier and how superstars are created now. So if you guys know a Korean superstar who has created buzz around the globe with one song, anybody can raise a hand and answer that. Who is that guy and which song it was? Yes, sir. How many views it got? 4.8 billion. Yeah, so that is the thing. With one song you can convert, or one thing can convert you into a superstar these days. So that's the power of digital media. That's what we wanted to discuss today, that how everything from a media planning perspective is changing. And with that, I would have first question to Jasya, to you. In the current scenario where every penny in terms of digital media planning and buying is checked and measured to the T, what is the role of content marketing and branded content in today's world? And how are clients looking into that? Thank you, Amit. And I'm glad I'm the first one to start, because content and content marketing is a very hot subject these days. I would like to begin by saying, the role of content marketing is no longer, what it used to be maybe 5 years ago. Because of the demand and need for business, it has now become ROI driven. And, I don't need to say this, but we're all aware that, how agencies, quickly adapt and mold to the changing, business requirements in the market. So for example, I'm part of Creative Futures, which you can say is a content wing of Essence Mediacom. And, that offering is so much more than just content and content marketing. It offers cultural and, relevant platforms to, offer a wider reach.
So having said that, I think the role of content now, is to drive reach with relevance. And that is the need of the hour for every brand, because we live in an era where, just visibility is no longer enough. Okay, thank you. So the key point will be to drive reach and relevance from content perspective. That leads into some question around data, that how is data shaping up and everything. And I think my question would be to you, Rashmi and Shweta, that what is the role of data-driven marketing in such scheme of thing today? Okay, so how are you utilizing data from a programmatic standpoint, as well as are the clients looking into building data lakes, which can help them to, sharply target the reach and relevance from media perspective? Can you please throw some light on that? Am I audible? Yeah. Okay, so very pertinent question at this point, and Amit, because, and we've all been in this industry for a while, and when I started, that was the time when we used to call the publishers and buy inventory. Things have changed a lot. The entire ecosystem has changed. And when we say data-driven marketing, today digital media marketing is actually synonymous to data-driven marketing, because that's what we do day in and day out. In fact, more than 80% of media that is planned and bought today is bought programmatically, which is essentially to say that we're not buying inventory, we are buying audience signals, which is all driven by media. And I completely agree to her point. Digital has become data, and I think just adding to that, what really makes a difference is that through data, you can actually identify who's the consumer you're talking to. And you can then start customizing, you can then start building relevance with the customer. So data actually helps bring in those insights to be able to tie in and create a more better ROI work for you. Just wanted to add to what Rashmi is saying and to the question that you asked about, clients in creating data lakes and so on and so forth. So actually, like I said, the ecosystem has changed, and usually the identifiers that we use to reach out to people, cookies and device IDs, are now deprecating. So it is imperative and inevitable for brands to invest in their own data infrastructure and build their first-party data. And we are helping our brands, our brand partners do that at Group M Motivator, creating entire data tech and MarTech backbones, wherein they are able to enrich their own data to then use for media marketing. Okay, so when you're creating all these data points, so how are we controlling privacy? And Abhimanyu, if you can throw some light on that, how are you making sure that everything from a privacy perspective is controlled? Right, so one more perspective, because the panelists mentioned that first party data, and for a general audience, right? What used to happen, and I'm sure everybody relates to this, you go to a website and then you go to a Facebook or an Instagram, and you would see the advertisements of not just the website that you visited, but other competition related to that website, right? Like other players which are in the same industry. And you are taken aback and you say, right, what's happening, right? I never visited, or people tend to even say that, I did mention it to my friend, and suddenly I'm seeing an advertisement of that in an Instagram or on Facebook. This is what I've heard a lot of people talk about, right? Now what essentially happens behind the scenes is data is being shared, right? Now India is also coming up with a data protection bill, and that's where I want to bring that privacy angle here. That first party data completely, I visit a website, they follow me, most of the users are okay, right? From a consumer perspective, not speaking from a marketer's perspective, because I think that's what the general, the audience, the quorum would relate to. They're okay with it. But the problem kind of comes in when the data is shared, and that's where privacy laws are now getting very stricter. India is also getting its equivalence of a GDPR in India. Now what that will entail is you will have platforms like consent management. Now I visit a website, even for getting my data, I need approval of the user.
If the user doesn't give me approval, I can't advertise, right? Which literally data is the new oil for sure, but it's not free. My data, if you advertise, so that solutions like consent management are going to come into the picture. From an advertiser perspective, I might not be able to buy data and advertise or get third-party data in marketing parlance. But what I could do is do contextual advertising. I'm in the travel industry. I would target, publishers that publish, content on the travel piece, right? Or sections in publishers that talk about travel. So context-based targeting would be more. Users would kind of also, from a consumer angle, we would see more of it. And marketers would also need to adapt to it. And even for your first party, you would need consent. You would need, technology backbone to delete data. If I say that, publisher, delete my data, that is kind of provisioned in GDPR. It will happen here as well. That data will need to be deleted. So there is going to be a lot of technological changes. Consumer will see a stark difference that, that topic that, I was speaking about it and start getting targeted, that's going to also probably come down. So there's a lot of change that's going to happen. So the audio content recognition will go for a toss where nobody will spy on us anymore. That's what you're saying? Yeah, okay, that's good. And anybody who's doing this consent marketing as of now, who has initiated this thing? Yeah, a lot of banks. I think in the Indian industry, what happens is even in the marketing spend pattern, BFSI is always the pioneer because one is because the nature of the spends are huge. And second is that, they are governed with more stricter, they have got sensitive data at play, right? So banks are already doing it. We have few of our clients working with us in the BFSI space, which are kind of working on the consent management platform. And I think that it's good, even though Indian, it's been tabled for a lot of sessions. Cabinet approved the Indian Data Protection Bill, but I think it's going to still take a while for the Parliament because a lot of things have happened in the last 3-4 days. But it's good to be a pioneer because it's going to come sooner or later. If you're prepared for it, which BFSI is actually shaping up for, it's good because, it's going to bite you later. Good, thanks. Okay, so my next question is around, the hot topic, which is around mobile advertising. 90% of the consumption is on mobile. Whatever content you consume and media, everything is through mobile. So how is mobile marketing getting evolved for most of your clients? What are people doing? Even from a content standpoint, is there something which you are doing only for mobile, which is mobile first kind of a thing? You guys can throw some light on that also. So if I can just pick up this question. I would like to just share an example of a recent content campaign that we executed for a handset category, Vivo, India. I'll briefly tell you about the campaign. So, we challenged 4 top Indian photographers to go on a mission to travel from the 4 extreme corners of India into the center of India, which is Sehora, Madhya Pradesh, marking an X on India's map. The name of the phone is X90 Pro, and the name of the series is Explore the Unexplored Challenge. So through this content marketing initiative, the content is still live. All of this is shot on, the Vivo handset, and the content is very relatable, to the target audience. And through the usage of the phone in the entire series, the key highlights and the USP of the phone, have been highlighted, to the correct target audience, which otherwise I would feel would have been missed, through maybe a digital ad. So you are using it, it's already done? It's ongoing. It's ongoing. The campaign is ongoing, and all content campaigns, like I said, are ROI driven. Good. So, there is a report by the end of each content campaign that we share to show where the money went. Okay. So the name of the program is Explorer. Explore the Unexplored.
It's a social media campaign. It's on a publisher's platform and Vivo's handle. I mean, you can check it out. It's a pretty cool series, one of a kind. That's nice. I was keen to ask because I'm sure that you're using x.com or twitter.com, in this case, Explorer. Yes, I mean, of course, you know, we use a lot of amplification medium to amplify that content. And while I'm sure you're going to touch upon it, you know, further into the panel discussion, but, you know, it also plays a very key role in digital media planning as well. So it's a very holistic, data-driven, you know, IP creation. Okay, thanks. Anything from media standpoint which we are doing different from a client perspective? See, mobile, if you ask me today, especially, I'll just talk about it from a media lens and from a media planner's point of view. Today, 80% of consumption is on mobile and 20% on desktop. And similarly, the spend ratios are also from our brands. When they spend in the similar ratio. So most of the spends are anyways going to mobile. So therefore, what is happening is when we plan, it is mobile first planning, right? And it automatically also translates into, you know, some of the other complexities, so to say, from a brand's perspective, because see, ultimately, it is not one size fit all marketing anymore. So you cannot have a 30-seconder TVC and run it everywhere. You know, each application on your mobile phone behaves differently and people consume it in a different fashion. So therefore, for each of those applications where you want to advertise, you need to create a different kind of experience. And it's ultimately become, the life has become difficult, but yes, it's far more engaging for the consumer. Rashmi, anything from your side? I think I'll just also add from a data perspective, like Shweta talked about multiple apps, and if you've ever thought how you're being tracked, every app, every action you take on mobile is actually being recorded. And those actions help us identify and what are you interested in, how many times have you opened an app. So if you see, the ecosystem of digital is so interconnected and each action leaves a data footprint that marketeers, agencies actually used to know you better and therefore to advertise. Okay, thanks. I think one last thing which I would like to ask about is how you guys are controlling the spam or, you know, the unsolicited ads, and what are the control and measures which advertisers can take from ad blocking perspective, if you guys can throw some light for the. You can start there, so go ahead. So actually there are a lot of solutions at play, you know, where you could, for example, detect fake installs, right? So very interestingly, performance-driven marketing is, you know, is something that we've all got used to. Everybody is looking for getting the best numbers, right? So there are a lot of companies which kind of came into existence, which you would have seen probably videos on WhatsApp and all that, you know, they have their engines where a lot of installs are happening, and those are fake installs, right? So there are tools which kind of determine based on the time of install that how much time does it take for a normal user to kind of go to the App Store or a Play Store and install the app versus a bot doing it. And patterns on data are studied, and then based on that, ML models are built which can predict that this is a fake install. So there are a lot of, you know, it's basically the thief and the cop theory, right? That you have people kind of who are trying to figure out a way around the system, especially in digital, because it's so easy. Anybody, you know, in their house could kind of devise a method or develop an algorithm to do it. And there are people on the other side which are building solutions to catch it, right? So there are a lot of tools in the market, SaaS products that have been built to determine this, you know, fraudulent activity. And that's a scope. That's also an area where, you know, budding entrepreneurs get into. It's an exciting area. That's very specific from performance marketing. Anything from brand upper funnel which you guys try to control for the clients? I think we keep one key thought in center, which is consumer is the king. And if there's obviously a consent or if there's an ad block, as a marketer, we do respect that.
What we try and therefore beyond paid media look are content solutions, where either through an influencer, either through a content program, that we can try and engage them. I think that's about it. All right. So I think that's about it. If I have to summarize, there are few key points which I have gathered, which can help you guys also. So one is like, which was reach and relevance, which you pointed out, which is really good, where media would be more driven from a reach and relevance perspective rather than only impressions and only clicks. The other thing is like more and more data-driven marketing is getting focused on. And the last one is, I think, content management, which will help us to control everything from a fake audiences and control the kind of spying which is happening these days. Yeah? All right. Thank you very much. Thank you all of you for this thing. Thanks. Well, some really interesting and pertinent insights there. Thank you so much for that rather interesting and insightful conversation. But please stay on with us. I would like to now call on stage Chief Revenue Officer, Mr. Sridhar Mishra, Z Digital and Publishing, just to bestow on our esteemed panelists our token of appreciation for joining us here tonight. Thank you so much, everyone. I would now like to call on stage Mr. Abhay Ojha, CEO Z Media, to bestow on our exemplary guests some prestigious awards. A big round of applause, everyone. Mr. Ojha, thank you so much for joining us on the stage, and the award for exemplary contribution in hospitality goes to Mr. Ritesh Malik. It's my great pleasure to introduce a dynamic entrepreneur who's made a significant mark in the hospitality industry. Please welcome Mr. Ritesh Malik, the owner of an Ardana chain of hotels. With a vision and passion for creating exceptional experiences, Mr. Ritesh Malik has achieved remarkable success. Up next, we have the award for Trailblazer Gaming Hero, and the award goes to Techno Gamers. And we couldn't join us in person today, so we have an AV. AV, please. Well, it is with great excitement that I introduce the gaming sensation who has captured the hearts of millions of enthusiasts across India. Please join me in welcoming gaming maestro Techno Gamers. We'll just be playing the AV for you shortly, as he could not join us in person tonight.
Hello everyone, I would like to thank Z Achievers for giving me the Trailblazer Gaming Hero. This recognition as well as support of my subscriber means a lot to me. Please accept my apologies for not being there in person to collect the award. I look forward to attending this amazing event next year. Thank you. Well, it turns out Techno Gamers is also present with us in person. He'll be joining us shortly. Techno Gamers, with great excitement, as I mentioned, I introduced the award for Trailblazer Gaming Hero. Moving on now, as I mentioned, Techno Gamers will be joining us in a short while from now. He's getting a little delayed. But moving on for now, most promising digital transformation specialist, the award goes to Anamika. The award for most promising digital transformation specialist to Miss Anamika. Moving on then, we have the award for innovative content creators. The award goes to Saloni and Shubham Gaur. Mr. Shubham Gaur is joining us today. Thank you so much, sir. A big round of applause, everyone. Now it brings me immense pleasure to introduce young talent, Mr. Shubham Gaur, who's taken the world of social media by storm. Of course, I'm sure he needs no introduction. Up next, we have the award for Inspirational Leadership Excellence in Education Community. The award goes to Ranjana Rajora Sharma. Everyone, a big round of applause, please. A big round of applause, Ms. Ranjana Rajora Sharma, for the award for Inspirational Leadership Excellence in Education Community. A big round of applause, everyone. Our next award goes to, the award category is Astrological Oracle Award, acknowledging exceptional predictive abilities. It goes to Sanjay Kumar Bhargav. Everyone, please, a big round of applause for Mr. Sanjay Kumar Bhargav. Also known affectionately as astrologer Radhakrishna, with an unwavering passion and 20 years of experience in astrology and a deep understanding of celestial forces. He's guided countless individuals on their life's journey. That is Mr. Sanjay Kumar Bhargav for you. Up next, we have the award for most promising and upcoming filmmaker that goes to Ms. Sarika Sanjot, a filmmaker, producer and a writer who's famous for her work in GST and a producer and as Kahani Rubber Band Ki as her first feature debut. That is Ms. Sarika Sanjot, a filmmaker, producer and writer, famous for her work, as I mentioned, in GST as a producer and Kahani Rubber Band Ki as her first feature debut. And then we have the award for Digital Transformation and Financial Advisory Award that goes to Mr. Rahul Sharma. So please join us on stage. Everyone, a big round of applause. Co-founder at Equity 99, has over 10 plus years of experience in technical and fundamental research and is well-versed, I must say, in analyzing companies' financial statements. Of course, he's been an advisor. He's helped many in this field, has conducted various fundamental and technical analysis, peer comparisons, market trend studies, and forecasts. Then we have the award for Digital Initiative in Infrastructure Industry, which goes to JK Cement, Walmax, Digital Partner, Nilmay. Please, everyone, a big round of applause.
The award for digital initiative in infrastructure industry, which goes to JK Cement, Walmax. We have a representative with us. Thank you, sir, so much for joining us tonight. A big round of applause, everyone. Then we have Digital Media Marketing Award that goes to Mr. Saurabh Saini. The award for Digital Media Marketing goes to Mr. Saurabh Saini. Everyone, please give a big round of applause for Mr. Saurabh Saini. So thank you so much for joining us tonight. Up next, we have the award for school with the best teaching practices and learning environment, which goes to Vardhaman Academy. Everyone, a big round of applause for Vardhaman Academy, please. Now, Vardhaman Academy, the school with best teaching practices and learning environments, it goes to Vardhaman Academy. The award is received by Mr. Atul Jain, Secretary, Vardhaman Academy. He is an outstanding visionary in education sector and has contributed immensely for the betterment of the youth. Big round of applause, everyone, for Mr. Atul Jain. Up next, we have the award for Game Changer in two-wheeler industry, which goes to Hero Extreme 160R 4V. And that's the award for Game Changer in the two-wheeler industry. Please join us on stage. Ladies and gentlemen, the award for Game Changer in two-wheeler industry, which goes to a Hero Extreme 160R 4V. Mr. Ojha, thank you so much. Thank you so much for joining us. A big round of applause, everyone, for Mr. Abhay Ojha, CEO, Z Media. I would now like to call on stage Mr. Shashank Mohan on stage to interact with the audience. Sir, thank you so much. थैंक यू चेक चेक सो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी नेशनल अचीवर्स अवार्ड, कई लोगों ने पीछे पूछा कि कैसे हमने सिलेक्ट किया, कैसे लोग आए। मैं आपको बताता हूँ, ये 3 महीने का रिग्रेस प्रोसीजर था, 3 महीने का प्रोसीजर। लेकिन कमाल की बात है कि बहुत सारे नाम ऐसे थे, और मुझे यहाँ से चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में सवाल आया ही नहीं। जूरी को नॉमिनेशंस की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं आपको बताऊं, जो सबसे टफ कैटेगरी थी उसमें मेरा नाम था, पर मुझे वो मिला नहीं। तो एनी विच वेज मैं आपको इस शाम के बारे में और बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ खास लोगों से आपका परिचय कराना चाहता हूं। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे हैं कुमार सानू का, और ये सस्ता कुमार सानू जो गाना नहीं गा सकता वो आपके सामने खड़ा हुआ है। तो आपको मैं सबसे पहले मैं शुभम, अगर वो यहाँ हैं अभी, मुझे दिख रहे हैं, हाँ शुभम, अगर आप प्लीज़ 1 मिनट स्टेज पर आ सके। ज़ोरदार तालियाँ शुभम के लिए प्लीज़। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने व्यूज़ हमारे नेटवर्क की कई सारी न्यूज़ पे आते हैं, शुभम की वीडियो पे अकेले आ जाते हैं। शुभम, ये माइक आप प्लीज़। शुभम, अक्सर आपने देखा होगा मोबाइल में वो रील्स शॉर्ट्स जब आते हैं, यूजुअली हम लोग टाइम जब हमारे पास होता है तो हम उनको देखते हैं। ये आपको नोएडा के साथ में और ग्रेटर नोएडा के साथ में दिक्कत क्या है? आप हमेशा नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अराउंड कंटेंट बनाते हो। दिक्कत नहीं है, मुझे तो प्यार है, इसलिए मैं वहाँ के कंटेंट बनाता हूँ, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ
और मुझे लगता है वहाँ के लोकल लोगों की जो कॉमेडी है वो थोड़ी सी अभी अंडर एक्सप्लोर्ड है, ज़्यादा उसको दिखाया नहीं है मेन स्ट्रीम में किसी ने, तो मैं वो सबके सामने लाने की कोशिश करता हूँ और पसंद आती है लोगों को, इसलिए मैं बार बार बनाता रहता हूँ। अच्छा, वो वाला जो लाइन है पर्टिकुलर कि नोएडा के सेक्टरों के नाम और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर, आप में से कितने लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा के, प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिएगा, स्पेशली जिन्होंने अभी पैनल किया था अमित के साथ में। आप लोगों को भी प्लीज़ हाथ खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी, आप लोग भी मेरी पूरी बात सुनेंगे। तो आप लोग प्लीज़ बताइए, आप में से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बारे में कितने लोग जानते हैं? ऊंचा हाथ खड़ा करें। सो ही हैज़ अ व्यू अबाउट दी सेक्टर्स नेम। यहाँ पे अधिकांश लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा के बारे में जानते हैं। सर, नोएडा ग्रेटर नोएडा के बारे में, अरे कुमार सानू जी आ गए। कुमार जी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्लीज़ वेलकम, जोरदार तालियां कुमार जी के लिए। तो हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे थे। सर, ये सेक्टर का नाम के साथ में क्या दिक्कत है, जरा आप बता सके तो। यार मतलब ग्रेटर नोएडा के अंदर ग्रीक न्यूमरल्स में सेक्टर के नाम रखे हुए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, और वहाँ के गांव के नाम आप देख लो, बिरोंडा, बिरोंडी, ऐसे वहाँ पे गांव है, उनसे उठा के सीधे तुमने उनको ग्रीक अल्फ़ाबेट दे दिए। यार वो एड्रेस भी नहीं लिख पाते, कई बार उनकी डिलीवरी कहीं और पहुँच जाती है, अच्छे से वो सब उनको नहीं मिल पा रहा। तो मेरे यहाँ सीधा वही है। और नोएडा में भी बहुत अच्छी नंबरिंग नहीं हो रखी है, वहाँ भी आप देखो 61 के सामने 52 है, 12 के सामने 22 है। अब पता नहीं किसने किया, और सबसे हाईएस्ट जो चार्जेस हैं अथॉरिटी के वो नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में ही है। मतलब इतने का घर, इतने ही पैसे आपको अथॉरिटी को भी देने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी मैथ सही नहीं मिल रही है, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ इसलिए। मैं वाकई में, ये तो नोएडा से हमारे यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड है, पीछे हंस भी रहे हैं। तो जोरदार तालियां शुभम के लिए। थैंक यू सो मच शुभम, एंड आपको ये अवार्ड बहुत बहुत मुबारक रहे। और मैं बिफोर हम लोग शुभम को फ्री करें और स्टेज हम आगे बढ़ाएं काम के लिए, कुमार सर आपसे भी हम लोग छोटी छोटी बात करेंगे। और मैं अदिति को बुलाना चाहता हूँ। अदिति अगर आप हैं तो, यस ओ देयर लाइट। जोरदार तालियां अदिति के लिए। वाणी प्रकाशन, दिल्ली के बड़े प्रकाशन है, 6 decades ऑफ पब्लिकेशन एंड क्रिएटिंग लिटरेचर। प्लीज या सो अदिति आज की हमारी फर्स्ट विनर भी थी। और क्या होता है कि जो फर्स्ट विनर होता है लोग उसको भूल ना जाएं, इसलिए अदिति ने मुझे धीरे से पीछे 4 किताबें दी थी कि इनको मेरे को दोबारा बुलाना ऊपर। अदिति, प्रॉमिस कंप्लीटेड। जस्ट किडिंग। मुझे लगा जो स्कूल में रोल नंबर था, पहला सीट में कभी चीटिंग का मौका नहीं मिला, आज भी वही हो गया लग रहा है। या सो अदिति, बिफोर वी कमेंस विद द प्रोग्राम, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, न्यू एज में जब सारा जो कंटेंट है वो डिजिटल कंटेंट की तरफ जा रहा है, पब्लिकेशंस को क्या प्रॉब्लम आ रही है, और प्रिंट क्या वो वाकई में जा रहा है, ऑफ हो रहा है, या प्रिंट अभी भी एक सक्सेस पर है और डिजिटल अपनी जगह पर है? देखिए, हम प्रकाशक हैं और इस समाज के कारीगर हैं। साहित्य, कला, संस्कृति, ज्ञान, ये हमारी कुछ ईंटें हैं जिनके बेसिस पे हम समाज निर्माण का काम करते हैं। प्रकाशन कभी भी इररेलेवेंट नहीं हो सकता। जो हमने इनोवेट किया अपनी पूरे वैचारिक ढांचे को वाणी में, वो ये कि हमने पुस्तक का ढांचा बदल दिया। हमने ये सोचा कि जब डिजिटल इरा 2000 के बाद एकदम बड़े रूप से और नई लिबरल इकोनॉमी के साथ भारत में इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो किताब सिर्फ वो नहीं है जो जिल्द के बीच में है। किताब कुछ भी हो सकती है। इसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। अगर वो वॉइस फॉर्मेट में है तो वो ऑडियो बुक है, वो डिजिटल फॉर्मेट में है तो वो ई बुक है, वॉइस डिजिटल मिला दे तो वो हाइब्रिड बुक है, और अगर प्रिंटिंग के लिए चली जाए, कागज़ पे छप जाए तो वो प्रिंटेड बुक है। किताब किसी भी रूप में बने, लेकिन बने और पाठकों के पास पहुँचे, क्योंकि 360 डिग्री में पाठक के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सो हिंदी या भारतीय भाषाओं के कोई भी प्रकाशक इस कॉम्प्लिसेंसी में अब नहीं रह सकते कि पाठक आएगा एक्सप्लोर करेगा, ऐसा नहीं है। ये सारा डिजिटल इकोनॉमी से भरा हुआ ये हमारी आज की शाम है, और हम सभी जानते हैं कि नाउ कस्टमर इज़ द किंग बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ द क्वीन। So we rather take care of the fact
that we are reaching out with our intellectual property in as innovative way as possible to our readers. Superb. Thank you so much, Aditi. Thank you so much. Thank you. And अब वो सवाल जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, मैं पूछना चाह रहा था, तो मेरा दिल भी कितना पागल है, हाँ? और तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, हाँ? और फिर वो लड़की जो कर देती है गाने में, क्या क्या मार देती है यार श्री, अरे लड़की आंख मारे, आप कैसे बोल। कुमार सानू जी हमारे बीच में, जोरदार तालियां हो जाएं सर प्लीज, प्लीज प्लीज सर, कुमार सानू जी के लिए जोरदार तालियां सर, प्लीज आइए सर, प्लीज बैठिए बैठिए सर। यस, तो कुमार जी से सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार और गुड इवनिंग। ये काम करने के लिए आऊँगा मैं सोचा नहीं था। मैं सोचा कोई अवार्ड फंक्शन होगा जाके जैसे करते हैं, बट यहाँ स्टेज पे बैठ के इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। ये आपने सोचा नहीं था? बिल्कुल नहीं सोचा था। देखिए सर, ये जी नेशनल अचीवर्स अवार्ड है जी, यहाँ देश भर के बड़े बड़े अचीवर्स आए हुए हैं, और ऐसे मौके पर अगर हम देश के सबसे बड़े अचीवर को यहाँ ना बिठाएं तो ये फिर ना इंसाफी हो जाती है। बहुत अच्छा किया आपने। जी, मैं जी, तो जी, इसके लिए मैं ये बहुत बड़ी खुश बात। हूँ। मैं बहुत खुश हूँ जी कि आप इन लोगों को जैसे इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे। जी जी, हमें वो सब ना करे, क्योंकि हमको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है जो इन लोगों को मालूम है। तो हमें हमारा जो लाइन है उस मामले में अगर, वैसे कुमार जी को इकोनॉमी के बारे में क्या पता है मैं आपको बताता हूँ। मैं 7 साल एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट रहा मुंबई के अंदर। कुमार जी को नहीं याद रहता है, माइक लेके तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो मेरे वेरियस स्टेंट्स के दौरान मैंने 3-4 बार घर पे इनका इंटरव्यू किया। एक तो मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि कुमार जी टीवी पे दिखते हैं, पार्श्व गायक में स्टूडियो में दिखता नहीं है, हाइट इतने लंबे हैं, तो पहली बार में आदमी इंटिमिडेट भी हो जाता है। लेकिन जब कानों में वो आवाज़ पड़ती है माइक्रोफोन में, हा क्या क्या सुगंध। मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये गाएंगे, मैं गाने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। तो कुमार जी ने वो पहले शख्स थे जिन्होंने हिंदी प्लेबैक इंडस्ट्री में गायकों के लिए रॉयल्टी और उनके दाम बढ़वाए। ये जोरदार तालियां बनती हैं इस बात के लिए। सर वो कितना डिफिकल्ट था जब पैसे नहीं दिए जा रहे थे पार्श्व गायन के लिए, वही 2-3 लोगों को पैसे मिल रहे थे, और फिर आपने जब वो स्ट्रगल किया और वो लड़ाई की, आपके साथ कौन लोग थे? नहीं, एक्चुअली क्या होता था कि उस समय प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन लोगों को एक मन में ऐसा फीलिंग्स था कि हम इनको चांस दे रहे हैं, तो तुम कुछ मांगो मत, हम चांस दे रहे, तुमको बड़े फिल्मों में बड़े हीरो के पीछे गाने के लिए चांस दे रहे, तो तुम कुछ बोलो मत, हम जो करेंगे। हाँ अच्छा, हाँ ऐसा था। कुछ बोलना नहीं है तुमको बस करना है, तुम खाली आओ, गाना गाओ, चले जाओ, और नमस्कार करके। तो हमने उस चीज़ को पलटा, हमने बोला नहीं, मैं गाऊंगा तो मैं पैसा लेके गाऊंगा। अगर आपको मेरे से गाना गवाना है तो आपको मेरा जो रेम्युनरेशन है वो आपको मेरे को देना पड़ेगा। तो ये लेके बहुत लड़ाई हुआ, आपको मालूम भी होगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें मैंने एक गाना गाया था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, सब लोगों को मालूम होगा शायद। सर याद नहीं आ रहा होगा सबको, अगर वो आप लोगों को मालूम नहीं है तुझे देखा तो ये जाना सनम? सर याद नहीं आ रहा। ये देखिए सर, ये तो सरासर चीटिंग है। थोड़ा याद दिला देता हूँ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। बस क्या है, ये गाना गाने के बाद ना इस फिल्मों में और भी गाने थे मेरा। ये गाना उस साल का 1995 का सबसे बड़ा हिट गाना था। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि नहीं मालूम नहीं है। आज भी ये गाना मैं जहाँ भी जाता हूँ दुनिया के कोई भी कोने में मेरे को गाना पड़ता है। बट ये गाना जो था, ये गाना गाने के बाद ना मेरे को एक छोटा अमाउंट का एक चेक दे दिया गया, जाओ। मैं बोला ना, ये अमाउंट से नहीं होगा।
मैं जो लेता हूँ वो देना पड़ेगा। इस वजह से इस गाने को मेरा 6ठा फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 6ठा फिल्म फेयर, ये 6th फिल्म फेयर अवार्ड था ना मेरा। हाँ हाँ हाँ, कंसेक्यूटिव मेरा। जी जी जी। हाँ, 5 बार तो हो गया था, 5 बार हो चुका तो था, रिकॉर्ड हो चुका था, ये 6ठा भी था, नहीं दिया गया। एंड उसके बाद उस फिल्म में मेरा एक गाना और था, कोई भी गाना और रखा नहीं, कट कर दिया गया। हम बोला यार बाहर में जाओ तुम लोग, मेरे को कट करोगे, मैं दूसरे से गा लूँगा, दूसरे का गाना गा लूँगा, मैं तो हर जगह पे गा रहा हूँ। तो इस तरह से मैनिपुलेट हुआ करता था। तो मैंने उस चीज़ को तोड़ने का बहुत कोशिश किया। फिर मैंने सारे अलका जी, कविता जी, जितने भी सब लोग हैं, सब पैसे मांगने लगे धीरे धीरे। हम बोला हमारे रेम्यूनरेशन दो। तो ऐसा कर करके एक रेट बना, हर एक का अलग अलग रेट बना, ऐसा करके एक मतलब ये सिस्टम एक चालू हुआ। आपने सर अभी आप आजकल जो सिंगर सुनते हैं, कई लोग ये कोशिश करते हैं, जब वो ग्रेट्स की बात आती है, तो जब किशोर की बात आती है तो कुमार की बात आती है, तो कुमार की बात आती है तो फिर सानुदा की बात आती है। तो सानुदा देखिए, मैं बहुत देर तक इनको वेट नहीं करा सकता, और मेरे पास ईपी नहीं है, तो वो पीछे से बार बार उंगली दिखा रहा है, गाना गवा। तो मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो गाना जो हमेशा आपके दिल के करीब रहता है और आपको लगता है कि ये गाना गाने से मेरे को सुकून मिलता है, आपका वो गाना अगर आप हमें बता सकें। और मैं क्विकली फिर यहाँ ब्रेक लेना चाहूँ। नहीं सर, प्लीज आप गाइए। आप एकदम रेडी हो गए हैं ना, मैं बोला कि अभी कुछ कहेंगे शायद। वो गाना मेरा दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये गाना जो है ये हर एक के साथ ये गाना जाता है, हर एक के साथ, चाहे वो लवर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो किड्स हो, चाहे वो गॉड्स हो, गॉडेस, जो भी, सबके साथ ये गाना फिट बैठता है। वो गाना ऐसा है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए ये शाम जो है वो अचीवर्स की शाम है। सबसे बड़े अचीवर कुमार सानू हमारे साथ हैं। सर, शाम अभी चलेगी, आपकी ज़रूरत फिर पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Mr. Sanu, I'm going to have to request you to please stay on the stage with us. We also have with us Miss Vinita Kumar, Entertainment and Lifestyle Editor, India.com. She has a few questions for you, sir. Please do stay on with us. Ladies and gentlemen, King of Melody, Kumar Sanu is here. बहुत बातें जो आपको नहीं पता होगी, मैं थोड़ा याद दिला देती हूँ सर सबको, कि over 22,000 songs across languages, I think over 26 languages, 35 years of 40 years of a career which is full of melody. I think हम लोग का collective achievement भी नहीं होगा सर उतना जितना भी आपका है. So thank you so very much for being here. You know, मैं जब आ रही थी ना तो मुझे लगा अब ये first question आपसे यही होना चाहिए that you know मेरे को ना ये 4 सीढ़ियाँ साड़ी पहन के उतरने चढ़ने में ही ना मैं I'm over, I'm done. आप कितने इतने fit हैं, you know, how do you do that, you know, what's happening? देखिए, एक तो मैं दारू नहीं पीता, वाओ, दूसरी बात है सिगरेट नहीं पीता, वाओ, और तीसरी बात है खाना जम के खाता था लेकिन अभी एकदम 50% कट कर दिया। एंड क्योंकि एज बढ़ते जा रहे, जैसे जैसे एज बढ़ते जाते हैं तो खाना कम कर देना चाहिए। हमारे हिस्से का खाना हमने खा लिया बहुत सारा, अभी हमको
कम करना पड़ेगा, तो कम किया। एंड सबसे बड़ी बात जो है वो चीज़ मैं सबको कहूँगा कि दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में मैं नहीं सोचता। बहुत बढ़िया। या उसका क्यों तरक्की हुआ, उसका क्यों अच्छा हुआ, उसने क्यों किया, उसने क्यों गाया, उसने क्यों इसमें, नो, ये मेरा कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि वो उनके नसीब से वो खाते हैं जो जिसके नसीब में जो होता है। हाँ जी। तो ये एकदम मेरा खाली है जगह। वाह। मैं इसमें ऐड करती हूँ, आई थिंक बहुत लोगों की दुआ भी है सर, वो जो आप दुआ प्रेज, ये तो देखिए, हाँ डेफिनेटली, ये तो सबसे बड़ी बात है, लोगों का प्यार, लोगों का दुआ, ये तो बहुत बड़ा जी। ये तो बोलने वाली बात नहीं है, ये तो पता चलता है जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि लोग कितना प्यार करते हैं। So, you know, this is the night of achievers. इंस्पिरेशन की बात हम कर ही रहे हैं, you know, सब करके गए हैं। कुमार सानू के लिए अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है? You know, एक कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि ये मेरा है, you know? देखिए, एक मेरा सबसे बड़ा मोमेंट जो था मेरा, मैं बोल सकता हूँ अचीवमेंट भी बोल सकते हैं, जो मैं एक बहुत ही गरीब घर का, मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पिताजी गाने का टीचर, गाने के घर में ही क्लास व्लास हुआ करता था। तो आप जानते हैं कि ओरिजिनल जो संगीत जो शिक्षक होते हैं और ओरिजिनल डांस टीचर होता है, जो ओरिजिनल हेड मास्टर होता है पुराने स्कूल का, ये लोग कभी आमीन नहीं होते देखना। ये गरीबी रहता है क्योंकि इनका खुददारी इनको कुछ गलत काम नहीं करने देते, खुददारी ट्रिमेंडस। तो मैं डैडी को देखा था तो हमारे बहुत ही गरीबी हालत था। उस समय हम हाफ चड्डी में, मतलब हाफ पैंट में, हम दौड़ दौड़ के लता जी के गाने सुनते थे रेडियो में। लता जी के लिए तालियां एक बार। लता जी के गाने सुनते थे जी। और सोचते थे कि क्या गाती है ये। लता जी के गाने, लता जी के गाने, लता जी के गाने, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने, किशोर दा के गाने, बट लता जी के गाने ज़्यादा दिमाग को। जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम 1992 फर्स्ट टाइम मेरे को बापी लाहिरी ने बैलेंसिंग रूम में बुलाया, गाना एक सिखाया उन्होंने, उसी समय गाना सिखा के बोला आप जाओ रिकॉर्ड करो। तो हमने रिकॉर्ड करने गया तो मेरे सामने जैसे मेरा माइक लगा हुआ था, इस जगह पे मेरा माइक लगता है, तो मेरे बाजू में एक छोटा सा इस हाइट पे एक माइक था। तो मैं बोला कि मेरे साथ कोई डुएट गा रहा है क्या? बोला हाँ गा रहा है, आ रहा है, अभी आ रही है वो, तुम्हारे साथ डुएट गाएंगे। तो मैं तो ठीक है, मैं गुनगुना रहा था। वो गाना था आप लोगों को मालूम, नया सावन करके पिक्चर था, प्यार तुम मुझसे करती हो, हाँ करती हूँ, ये गाना था। तो अचानक देखा, दरवाज़ा खोला, सफ़ेद साड़ी में लता मंगेशकर। वाओ वाओ। दरवाज़ा खोल के उन्होंने अंदर आए तो मैं देखता रह गया। दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज माय लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि लता मंगेशकर जिनके बचपन में गाना सुनते थे दौड़ दौड़ के गली गुली में, हमारे गली कूचे में, उनके साथ मैं खड़े होकर एक साथ गाना गाऊंगा। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो उन्होंने खड़े होके, मैं तो डर के एकदम, तो उन्होंने मेरे को बोला तुम बिल्कुल अच्छा गाओगे, मैं तुम्हारा सब गाना सुना, तुम बहुत सुर में गाते हो, तुम बहुत अच्छा गाओगे बिल्कुल। हम लोग आपके सामने कैसे करके, बोले नहीं। फिर तो दोनों में जो बात हुआ, फिर उन्होंने थोड़ा सा मेरे को हेल्प किया एंड गाना कर लिया, गाना बहुत अच्छा हुआ। तो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि उस दिन जो मेरे दिल में हुआ था, मेरे दिमाग में हुआ था, आई थिंक उतना टेंशन, उतना बड़ा झटका मेरे लाइफ में और कुछ नहीं था जो लता जी को सामने देख के टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली सर। यस यू नो सर, यू नो बहुत, जैसे मैंने बोला कि इतने गाने, यू नो इतने गाने हैं सबके यहाँ पर ना, सबके फेवरेट्स हैं सबके, मेरे भी हैं। ऐसा कोई गाना ना, रोमांटिक गाना जो आपको लगता है कि यार ये अगर कोई शिद्दत से गा देना तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी का दिल का मामला फिट ना हो, यू नो लाइक ऐसा कोई गाना, ऐसा एक रोमांटिक गाना जो आपने गाए हो। ऐसा गाना आपने क्या बोला, मैं समझा आपने नहीं। गाया हो कोई हाँ, ऐसा रोमांटिक गाना, रोमांटिक हाँ, हाँ, जो आपको लगता हो कि अगर ये कोई शिद्दत से गा के किसी को इम्प्रेस करना चाहे ना, हाँ,
तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका दिल का मामला फिट ना हो। ये घटना है तो मेरे लाइफ में तो ये घटना है, सारा भारत में प्यार मोहब्बत मेरे गाने से नहीं किए, हाँ। ऐसे लोग बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बात आप है ना, इम्प्रेस करने के लिए कैसेट में भर भर के गाना भेजना, गाना देना है, फिर धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, आड़े आड़े देखना, वो सब मेरे गाने से बहुत हुआ। लोग तो मेरे को ऐसा पागल कर दिया था, बोले कुमार जी आपके गाने से तो मेरा प्रेम हो गया मेरा प्रेम हो गया। मैं एक जन ने बोला अरे मैंने शादी कर लिया यार, कुमार सानू के गाने में शादी हो गया मेरा। हम बोला बस और आगे मत बढ़ो, ये चुनने मुन्ने ये सब मेरे गाने के लिए नहीं हुआ, ये सब तुम लोगों का ही मेहनत है। तो जो भी है, तो ये तो अक्सर सुनने को मिलता है। तो ऐसा कोई गाना है नहीं कि सभी गाने ऐसे, सभी ऑलमोस्ट मेरे को मिला ही ऐसा गाना। ये ऊपर वाले की बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे को ऐसा गाना दिया, गाने मिले मेरे को, ऐसे गाने मिले जो लिरिकली बहुत पावरफुल था, म्यूजिकली बहुत पावरफुल था, एंड वोकली तो था ही। और जिस हीरो पे सब हुआ, तो हीरो लोग भी ठीक ठाक था देखने को। हीरो ठीक ठाक था, गाने के बाद सुपर हिट हो गया यार। आजकल होता नहीं है ठीक ठाक, तो उस समय ठीक ठाक हीरो था, तो नेचुरली गाना सक्सेस हो गया। तो इसमें टोटल टीम वर्क है, लेकिन क्रेडिट मेरे को देते हैं लोग जो सामने आके बोलते हैं। सर क्रेडिट है आपका ना? क्रेडिट है आपका, है 100% क्रेडिट है। तो देखिए ना, क्रेडिट तो लास्ट वर्ड है मेरा तो लास्ट वर्ड है। पहले तो गाना बनता है, लिरिक्स लिखता है, फिर कॉम्पोजिशंस को अरेंज किया जाता है, फिर हमको लास्ट में बुलाते हैं गाने के लिए जी, और हमने आके जो गा देते हैं वही हीरो उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो जो भी है, हम लोगों को पहले एक्टिंग कर देना पड़ता है। kudos for Sanuda here. Sir, before I let you go ना, यहाँ ऑडियंस में ना एक सॉलिड फैन है, बोलेंगे नहीं वो खुद से, बट मैंने इंटरनली सोर्सेज से पता लगाया है। मिस्टर अभय ओझा, ZMCL CEO, अपने जो CEO हैं, आई वुड लव टू कॉल हिम ऑन स्टेज। एंड तो सर जो हैं वो करता धरते हैं हमारे यहाँ के। अच्छा, हाँ, तो आई एम ए स्मॉल पर्सन टू इवन से कि उनको कुछ नहीं आता है, बट आई एम होपिंग कि सर ये ना गाना सिखाने के लिए तो बहुत छोटा टाइम है, कम टाइम है, बट अगर आप इनको एक सारे गामा सिखा देना तो इट विल बी फैंटास्टिक। सर आई एम सॉरी, मैंने ये पता कर लिया कि सारे गामा तो नहीं आता है आपको, या तो सर बस एक सारे गामा अगर आप बता दें इनको, और आप अप्रूव कर दें। हाँ बता दूं? हाँ, इनको अगर आप सिखा दें। क्यों सर? नहीं, ऐसा नहीं है, जरूर आपके बारे में जब बोल रहे तो जरूर कुछ तो होगा। जी सर, कोशिश करता, कुछ तो होगा। हाँ, जब बोल रहे हैं तो बहुत जल्दी होगा कुछ तो होगा। जी हाँ, करिए। सर आप बताओ सर। सा अच्छा, रे अच्छा, गा मा वाह। और क्या करेंगे आप? मैंने पूछा गाने के अलावा और क्या करेंगे? सर आप कुछ गुनगुना दीजिए, मैं कोशिश करूंगा सर। अच्छा चलिए जी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। गाइए सर। मेरे ख्याल में ना मुझे खड़ा हो जाना चाहिए, पीछे से आपने गाना चाहिए। खड़ा हो जाइए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप खड़े होकर कोशिश करता हूँ, जैसे भी करके गाइए, हमको एक्सेप्टेड। मैं सोचा था सिर्फ लिपसिंग करना पड़ेगा। एनीवे, मेरा दिल भी वाह कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे ही करता है। वाह, अच्छा गाया। थोड़ा बहुत इधर उधर था, लेकिन सर ठीक है। गुरु बन गए ना आप, तो थोड़ा तो प्रोग्रेस चलता रहेगा ना। नहीं, अच्छा। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम
आते हो, करिए। वाइफ को दिमाग में रख के गाता हूँ। पर सा गाइए। पर सामने जब तुम आते हो। कुछ, कुछ भी कहने से डरता है। वाइफ के सामने सबका ऐसे ही हाल होता है सर। हाँ सर फिर से लाइन गाइए, मैं भूल गया। कुछ भी कहने से डरता है। कुछ भी कहने से डरता है। लो लड़की भाग गया, वो लड़की भाग गया, वो लड़की भाग गया, जिनको ये अप्रोच किया। अच्छा चलिए आगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप एंड अच्छा। सर एक चीज पूछना चाह रहा था, मैं वहां से बैठ के बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि आपसे पूछूंगा। सर ऐसा कौन सा गाना है, इतने साल सर आप तो मतलब मैं तो बोलूंगा कि हम तो बड़े ही आपके गाने सुन सुन के सब जने हुए। आई एम श्योर, प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सर के लिए। ऐसा कौन सा गाना है सर जो आपको लगता है कि ये गाना मुझे गाना चाहिए था, किसी और सिंगर ने गाया, वो आप आज भी गुनगुनाते हो, या आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया गाना है और मैं आज इसको गुनगुना रहा हूँ, वो सिंगर कोई और है सर? ऐसा बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गाने सर जो बिल्कुल दिल के करीब हो, आपको लगता है कि ये गाना आप मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं फील होती है ना, जैसे नॉर्मली सर मैं तो बिजनेस वाला हूँ, जर्नलिस्ट नहीं हूँ, बट एक क्वेश्चन सारे सब जगहों के दिमाग में आता है। दिमाग में हर आर्टिस्ट होता है, लेकिन क्या है कि हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे गाने हैं जो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अगर ये गाना गाता। सर लेटेस्ट कोई सॉन्ग में से, जैसे मतलब पिछले 5-7 साल में से कोई ऐसा सॉन्ग हो जहाँ आपको लगा हो कि हाँ यार ये गाना तो है ना मेरे लिए बना था, और मतलब या मतलब ऑन कैमरा मत बोलिए, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। और सर एक गाने तो लोग भी बोलते हैं, हम और तुम जो गाना था ना, हम और तुम, हम और तुम, सांसों को सांसों, ये जो गाना है ना, ये सैफ अली खान और प्रीति जिंटा के ऊपर फिल्माया गया था। सबसे बड़ी बात है कि ये गाने जब हुआ था, हाँ ये गाने जब हुआ था तब मैं अमेरिका टूर कर रहा था, तो प्रोड्यूसर ने रुका नहीं, इसको दूसरे किसी से गवा लिया। ऐसा बहुत सारा गाना है जो मैं गाता तो मुझे लगता कि मेरे को ये गाना मिलना चाहिए था। ऐसा रिग्रेटनेस हमेशा होता है, और ये होना भी अच्छा है। जी सर, होना ये चाहिए, बहुत जरूरी है, होना चाहिए। भूख जो है ना, जी सर, ये होना चाहिए। नहीं सर, मतलब थैंक यू सो मच। मतलब आई एम श्योर, मैं आपको सच बताता हूँ सर, मैंने काफ़ी आपकी जो गाने थे, ये गाना जिसने गाया बाबुल सुप्रियो ने, वो मेरा थोड़ा सा कॉपी करते हैं, लेकिन बट नहीं, लेकिन अच्छा गाया, ये गाना अच्छा गाया, वेरी गुड सिंग किया गाना। ऑलमोस्ट ये इतना अच्छा गाया था कि मैं बाहर जहाँ कहीं भी शो करने जाता हूँ तो मेरे को सब बोलते थे कुंवर जी आपका वो हम तुम वाला गाना गाइए, आपका। लोग सोचते थे कि मैं ही गाया वो गाना, मतलब इतना अच्छा वो। सर एक क्वेश्चन है, जो कि डिजिटल वर्ल्ड में बैठे हैं हम यहाँ, तो डिजिटल को लेके मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से क्वेश्चन था, क्योंकि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में सब जो उन्होंने अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक एआई को लेके सबने एक पार्ट डाल दिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपकी आवाज़ का कॉपीराइट बनाया है, या आपने उसका कोई मेटा वर्जन बनाया कि नहीं बनाया अभी तक? नहीं बनाया, क्योंकि हमारे जो सीटीओ साहब हैं, जो हमारे ग्रुप इनोवेशन ऑफिसर साहब हैं, अच्छा, ये कॉपीराइट बनाना चाहिए। नहीं, आप नहीं करोगे तो अगर एआई ने आपका गाना नाम उठा के लग दिया तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। जो आपने रॉयल्टी उस समय स्टार्ट की थी ना सर, आपने जब स्टार्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात बोल रहे हैं। कॉपीराइट, वॉइस का कॉपीराइट कैसे होता है आई डोंट नो, वो हम आप थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे आपसे। सर हम बिजनेस वाले हैं सर, वी कैन हैव 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एंड वी कैन गेट इट डन फॉर यू। वो तो मैं अभी आज ही मैं दोपहर को अमेरिका से आया, और अमेरिका में स्ट्राइक वगैरह चल रहा है एआई को लेके। राइटर्स एसोसिएशन जो है वो लोग स्ट्राइक कर दिया, एंड बहुत ही हालत ख़राब बॉलीवुड में। तो मैं एलए में ही था, तो एलए में से आया हूँ एआई लेके। तो एआई के ऊपर जो वहाँ पे जो चर्चा हो रहे थे, जो चीज़ हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक भी है जी, और काफ़ी हद तक खतरनाक है जी, और काफ़ी हद तक सहूलियत भी है। लेकिन
मैं समझता हूँ कि कॉपीराइट अगर मेरे गाने का, मेरा वॉइस का अगर कॉपीराइट करने से अगर एआई से मैं बच जाऊँ, नहीं सर आप बच सकते हैं। जैसे शानुदा, मतलब आज जो टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, हम सब चाहेंगे कि आप ना सिर्फ 100 साल, 10,000 साल तक जिंदा रहें, और वो जो मेटा वर्जन आपका हो, जो आपका वॉइस हो, वो रॉयल्टी आपकी फैमिली को ही जाएगी, डोंट वरी, बट यू शुड, आई मीन मेरे ख्याल में आज के 10,000 साल बाद भी कोई जनरेशन आएगी तो वो भी जो आपका जो सबसे फेवरेट सॉन्ग्स है आशिकी के या दूसरे और जो भी हैं वो सारे सुनते रहे सर। तो मतलब डू यू रियली थिंक दैट आपको ये करना चाहिए? बिल्कुल, आपका ये बात मैं एकदम दिमाग में सटका लिया और मैं डेफिनेटली करूँगा। ये वॉइस का कॉपीराइट मुझे आइडिया नहीं था, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया, एक बहुत ही अच्छा दिया। देखिए, टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते। ये जो बात बोलते हैं ना, पहले जब ऑटोमेशन आया था तब उस समय भी एक चिल्लम चिल्ली हुआ था, बहुत धर्मघट हुआ, बहुत लंबा लंबा मोर्चे निकले कि ऑटोमेशन के खिलाफ, बट टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। जी सर। सो उसके हिसाब से उसके साथ साथ कुछ ऐसा चीज़ भी बढ़ना चाहिए जी जो उसको बैलेंस करे। नहीं, मतलब ये ख्याल इसलिए आया जब आपने बोला कि आप जैसे आपने रॉयल्टी सबसे पहले स्टार्ट की थी, और आई एम श्योर अब सारे आर्टिस्ट जो है इसको करने वाले हैं, और जो हमारी कंपनी है जिसमें मेटा वर्जन में जो हम काम कर रहे हैं मेटा में, उसमें आपको हम एज इट इज़, मतलब आपकी आवाज़ के साथ और आपके मतलब इतने खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ हमेशा के लिए ज़िंदा करके हमारे पास रख सकते हैं। और उसकी रॉयल्टी आपको दे सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। सो कल को अगर एआई ने कोई नया सॉन्ग किसी राइटर ने लिखा है, कंपोज किया है, कंपोज भी आजकल एआई में हो रहा है, और उसने बोला है कि हमको कुमार शानू साहब की आवाज़ चाहिए, तो वो बिल्कुल बाकायदा उस समय वो सॉन्ग उसमें आपकी आवाज़ से गाएगी और क्रेडिट आप ही के पास रहेगा सर। क्या बात है। दैट्स ऑल सर, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। ये होता है बिजनेस माइंडेड। हाँ 10 मिनट यहाँ बैठे, उसके अंदर एक बिजनेस का गोला दे के चला गया। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। सानुदा, हाँ जी, यू नो आपको बोला जाता है 90s वॉइस, बट मैं यहाँ अभी सबको बोलती हूँ दैट ही इज अ वॉइस फॉर एवर, फॉर एजेस। सो हिट इट लाउड फॉर कुमार सानू जी हियर। सर थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जाऊँ या बैठूँ? नहीं, अभी आप नहीं जा सकते सर, प्लीज स्टे ऑन विद अस। वी हैव सम मोर prestigious awards that we need you here for. Thank you so much sir, I know you've been very patient. Well sir, अब हम awards start करेंगे। The category is Astrological Oracle Award acknowledging exceptional predictive abilities, which goes to Sanjay Kumar Bhargav. हाँ जी सर, प्लीज। The next award is Most Promising in Upcoming Filmmaker, which goes to Ms. Sarika Sanjot, a filmmaker, producer and writer who is famous for her work in GST as a producer and Kahani Rubber Band Ki as her first feature debut. Big round of applause, everyone. And the Trailblazer Marketer of the Year award goes to Mr. Jatin Chikara, CMO, Royal Enfield, a trailblazer in the world of digital marketing and brand strategy. Please put your hands together for Mr. Jatin Chikara, the Chief Marketing Officer for Royal Enfield. Up next, we have the award for Distinct Voice in Stand-Up Comedy that goes to Mr. Maheep Singh.
Thank you so much, sir. Now I would like to call on stage Dr. Idris Loya, Chief Technology and Innovation Officer, SL Group, to bestow on Mr. Kumar Sanu Outstanding Contribution to Music and Lifetime Achievement Award. The Outstanding Contribution to Music and Lifetime Achievement Award. Everyone, please stand up. A big round of applause, everyone, for the award for Outstanding Contribution to Music and Lifetime Achievement. It goes to Mr. Kumar Sanu. Thank you so much, sir. Thank you so much for being so patient, sir. I would now like to call on stage Mr. Sridhar Mishra, once again, Chief Revenue Officer, Z Digital and Publishing. Sir, thank you so much. Please join us on stage. Big round of applause, everyone. And now the award for Media Campaign of the Year, Royal Enfield Hunter, PhD Media and Royal Enfield. The award for Media Campaign of the Year, PhD Media and Royal Enfield. Up next, we have the award for Outstanding Contribution in Digital Marketing. The award for Outstanding Contribution in Digital Marketing goes to Mr. Manoj Verma. Mr. Manoj Verma, thank you so much for joining us tonight. A big round of applause, everyone, for the award for Outstanding Contribution in Digital Marketing, which goes to Mr. Manoj Verma, pardon me. And now, the award for Most Promising Emerging Director, it goes to Mr. Divyansh Pandit. We would like to invite on stage very promising and eminent filmmaker, Mr. Divyansh Pandit. Also, an impressive filmmaker known for his thought-provoking films and the director of the recently released short film, Pinddan, Mr. Divyansh Pandit. Next, we have the award for Trailblazer Gaming Hero, which goes to Techno Gamers. It's with great excitement that I introduce a gaming sensation. As I mentioned earlier, he could not be here in person, so we do have a representative who will be receiving this award on behalf of Techno Gamers, the award for Trailblazer Gaming Hero. Thank you so much, Mr. Sridhar. Thank you so much for joining us. I would now like to call on stage Mr. Maheep Singh. Sir, please join us on stage. I'm sure we could all use a good laugh right now.
good laugh, and we'd really like to get a glimpse to have you on stage here. I don't want to keep everybody from dinner and drinks, so I'll try my hand at one or two jokes, if it is okay, right? Sure. So I'm very grateful, first of all, for the award and to be in such a esteemed company of people, distinguished guests, and Shanuda, getting award from you is a big deal for me. So you can't even imagine that how much bigger a fan I am. पर मैं गाना गाऊंगा नहीं सर, जो गलती इन्होंने किया वो नहीं करेंगे, वो हमें मालूम है. So I'm going to start with something. So do I have everybody's attention here? Hello? Sir. So the first joke is, okay, this was my first joke in the memory of Dr. Manmohan Singh. मुझे बहुत याद आते हैं, चुप तो रहते थे कम से कम, और वो इतने पढ़े लिखे थे कि दूसरा आदमी प्रेशर में आ जाता था कि इतने पढ़े लिखे हैं, कुछ तो सोच रहे होंगे. वो चुप रहकर दूसरे आदमी पे प्रेशर डाल देते थे कि अब तू सोच के मैं क्या सोच रहा हूँ. So I don't have many jokes I can tell here. The very, very obnoxious jokes. So I'll tell a Sardar joke. If it is okay, any Sardars in the house? Who's Sardar in the house? Who's raising hands? कौन? अच्छा. ओ एक ही? ओके. ठीक है. बहुत है, बहुत है. तो I don't know, Shanuda, what happens? जब लोग सरदार को देखते हैं, आप तो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, कुछ वो सरदार को देखते तो उनको कुछ हो जाता है, अंदर से कुछ उनका चेंज हो जाता है ना, एकदम से. जैसे मेरे को स्ट्रीट पे कोई मिलता है ना, तो मेरे को आई हैव बीन ग्रीटेड बाय स्ट्रेंजर्स ऑन द रोड विद बल्ले बल्ले. उनको लगता हम घर पे यही करते हैं. मैं सुबह उठता हूँ, बल्ले बल्ले मम्मी, बल्ले बल्ले बेटा. आई हैव बीन ऑफर्ड मक्के की रोटी सरसों का साग इन इटालियन रेस्टोरेंट्स. वो तो ब्रिंग इट एज अ सरप्राइज. अरे आपके लिए लेके आए, मुझे नहीं खाना यार. इटालियन रेस्टोरेंट है, कोई रिजोर्टो लेके आओ, कुछ लेके आओ, है ना. वो अगर रिजोर्टो लाएंगे तो वो रिजोर्टो पे मक्खन डाल के ले आते हैं. मक्खन तो खाते ही होगे आप. बहुत बुरा हाल है सर. आई हैव बीन मिसयूज्ड बाय वुमेन. नहीं वैसे नहीं, मतलब जैसे ऐसे किसी फंक्शन पे गया तो मैं अपना कोने में खड़ा होकर टिक्की छोले खा रहा हूँ, है ना. तो तभी एक आंटी गंदे से रोते हुए बच्चे को लेके आएगी, कहेगी भाई साहब बड़ा शैतान है, मान नहीं रहा, ज़रा डरा दो. मेरा दिल करता है मैं उनसे कहूँ पैन जी, जिस शैतानी की वजह से ये शैतान पैदा हुआ है, अगर वो शैतानी करने से पहले आपने मुझसे कंसल्ट कर लिया होता तो बच्चे को डराने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Lot of things happen. Punjabis in the house, give me a cheer. Punjabis. मुझे यही बात आपकी पसंद नहीं है. पंजाबी एक ऐसी कौम है जो खुश है, उसे खुद को पता नहीं क्यों. वो खुश है तो खुश है. अगर चेस की गेम चल रही होगी ना, तो 4 पंजाबी कोने में खड़े होके कह रहे होंगे सचिन, कम ऑन सचिन.
वो कहता पाजी ये सचिन नहीं है, ये क्रिकेट नहीं हो रहा, चेस की गेम है। कहता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो शोर मचाना है, हम मचा रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। हम बच्चों को अजीब अजीब सी बातें सिखाते हैं, है ना। वो छोटा सा थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा, उसको हम लोग दुद्दू को बुब्बू के बोलते हैं। क्यों बोलते हो बुब्बू तुम? बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो भी बुब्बू बोलने लग जाता है। 15-15 साल के लौंडे बुब्बू बोल रहे हैं। लौंडे सुहाग रात पे बुब्बू मांग रहे हैं। लड़की वीगन है, लड़का लैक्टोस इंटॉलरेंट है, वो सुहाग रात नहीं मना रहे, वो डिस्कस कर रहे हैं कि बुब्बू क्या होता है। ये सच बात है। मेरा एक दोस्त था, उसने आईआईटी क्लियर किया था और उसके बाद आईआईएम भी किया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो भी बुब्बू बोलता था, अब तो खैर बहुत ही बड़ा आदमी बन गया, उसकी मम्मम बनाने की फैक्ट्री है। तो और क्या बताऊं आपको, आप लोग तो सब दिल्ली के हो। दिल्ली के हैं सारे के सारे, दिल्ली के हैं, ऑल ऑफ यू फ्रॉम दिल्ली। शानुदा तो आप तो बॉम्बे के हैं अभी, है ना। तो पहले कोलकाता के थे ना, राइट। तो दिल्ली में सर मैं ना दिल्ली से ना गुड़गांव चला गया, हरियाणा। किसी ने सजेस्ट किया कि बहुत अच्छी जगह है, तो मेरे को भी लगा कि यार बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उच्चारण हरियाणा में किया था। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका मतलब है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जिसका हरियाणवी ट्रांसलेशन है देखी जाएगी। वहाँ लोग फल की चिंता नहीं करते सर। वहाँ पे अगर किसी की टक्कर हो जाए तो वो किसी को फ़ोन करता है तो वो ये नहीं पूछता है कि क्या हुआ, वो पूछता है कितनी बंदूक लेके आऊँ, कितनी गाड़ी लेके आऊँ। और वो दिल्ली का स्टीरियोटाइप है ना, वो कहते हैं कि तुझे पता है मेरा बाप कौन है, सब लोग ऐसे बोलते हैं दिल्ली में, है ना। गुड़गांव में पता होता है, और वो बताते भी हैं कि ये एम्बियंस मॉल हमारे दादे की ज़मीन पे बना है, यो जो साइबर हब है ये हमारे चाचे की ज़मीन पे बना है, ये जो हाईवे देख रहे हो ये पता नहीं किसकी ज़मीन थी, हमने गोली मार दी, अब ये भी हमारी ज़मीन है। तो माँ फलेशु कदाचना वाले लोग हैं वो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तो धक धक करता है अंदर से, ठीक है ना। पर गुड़गांव इज़ अमेजिंग। पर गुड़गांव जो है ना वो हरियाणा नहीं है, रियल हरियाणा है। वहाँ जहाँ खेत हैं, हरियाली है। तो मैं ऐसे ही एक दिन जा रहा था, तो पहले तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि खेत वेत नज़र आ रहे हैं। फिर मैं एक जगह फंस गया, वहाँ पे एक दीवार थी सर, उसके आगे भैंस खड़ी थी। तो मैंने कहा यार ये तो ठीक रास्ता नहीं है। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, बुज़ुर्ग क्या मेरे जैसे थे। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा ताऊ मुझे हाईवे पे जाना है, कैसे जाऊँ? तो उन्होंने थोड़ा सोचा पहले, फिर कहता सरदार जी आप यूँ चले जाओ। मैं कहा ये तो मैं फिर वहीं आ जाऊँगा ना। कहता नहीं नहीं, जहाँ जहाँ गेहूँ लगा हुआ है ना वहाँ से सीधे जाओ, फिर जहाँ चावल लगा वहाँ से उल्टे हाथ हो जाओ। मैं कहा अच्छा। मैं कहा अभी 6 महीने तक तो मैं ये सोचता था कि तरबूज पेड़ पे लगते हैं, और तू सोचता मुझे पता है कि चावल और गेहूँ में क्या फ़र्क है। वो तभी वहाँ पे एक जवान लड़का आ गया, यंग लड़का। उसने कहा कि ताऊ क्यों गलत रास्ता बता रहा है सरदार जी को। तो ताऊ को गुस्सा आ गया। ताऊ कहता ना तू बताएगा ना सही रास्ता, तुझे हमने नंगा देखा है। कहता नंगा तो ताऊ हमने भी तुझे देखा है। तो वहाँ पे 15-20 लोग इकट्ठे हो गए, तो रास्ता तो किसी ने नहीं बताया। वहाँ ये डिस्कशन शुरू हो गया कि किस किस ने किस किस को नंगा देखा है। तो मैंने कहा इससे पहले ये मुझे नंगा देख लें, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, यू बीन अ लवली ऑडियंस। थैंक यू शानुदा। Thank you so much, sir. Thank you very much. Now,
distinguished guests, esteemed colleagues, and all of the remarkable individuals present with us this evening. On behalf of Z Media, I stand here with a heart filled with gratitude and immense pleasure as we welcome to the end of this extraordinary, as we come to the end of this extraordinary event, the success of this gathering. It would not have been possible without the support and presence of some exceptional individuals who have graced us tonight. Last but not the least, our heartfelt gratitude goes out to all our partners, well-wishers, Kalyan Jewelers and Nippon India's leading mutual fund, whose unwavering support has made this event possible. Thank you all for part of being this joyous celebration. You've all been a lovely audience, and with that we break for dinner and drinks. Time to fuel ourselves for some more enriching conversations and interactions ahead. Thank you so much for being a lovely audience once again.